I want to understand the psychology of sex. Just ask this question to the couples who frequently do sex. Taboos around sex are still there. आप ये नहीं बोल सकते कि जो सेक्स के बारे में बात कर रहा है वो है. मेरे साथ कंसल्टेशन या अपॉइंटमेंट लेने के लिए अभी जाएं www.drnehamehta.com और वॉइस वीडियो चैट या क्लिनिकल कंसल्टेशन बुक करें. आप कॉल भी कर सकते हैं 9728132637 पर. Do you think the taboo around sex still exists, wherein we are compulsive to produce more like us, or the definition has evolved with time? See, the taboos around sex are still there, okay? But the only thing that has changed is people started talking about it. Now people understands that there are people of our same framework or the mindset who understands, who listens, or if we'll talk, it's more like a fun matter now. I remember the comedies previous days are more about hidden sexual works, है ना? कि कुछ बात हो रही है और उसमें बस ऐसे बोल दिया है ना? But now it's so open. I have seen the stand-up comedians talking about sex so openly. I have recently seen a Harsh Gujral stand-up comedy where he was openly talking about cuffing sex or making it more. And it went so lively, the threesomes and everything. Now people understand, they talk, they want to explore, they still want to know what is new cooking up these days and how people are doing it. There was a time, I still remember there was a time that's when I was studying in 2018s around, then this wife swapping was somewhere a crime patrol series wala topic hai na ki oh my god ye kya baat hai. Lekin ab I think people are openly talking. Now I've seen the articles where like guys coming up and say ki this is a good culture and doing it. People are talking, but people are not opening up their mind about accepting it. They are not giving emphasis on providing pleasures. They are just knowing the ways. They want to know, अच्छा फिर ऐसे कैसे करते हैं और कौन सा position होता है, ये करता है, बस बातें हैं. But when it's about actually implementing it and वो बोलते हैं एक होता है कि रास्ता सीधा पहुंचना और एक होता है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करना. वो स्टेप बाय स्टेप नहीं करना चाहते. They just want to go towards it, come back and tell people I have done it. So it's more about talks, hoarding, boasting, but it's not about implementing and doing it peacefully, mindfully and pleasureful. Sex जो है मैम सबसे intimate form of connection है that you can form with it. Right. Emotional level पे भी आप सबसे ज़्यादा किसी से जुड़ सकते हैं is through sex. Exactly. I want to understand the psychology of sex while we are undergoing or while we are actually performing this act of sex. हमारे brain में क्या चल रहा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वास्ट क्वेश्चन है. मैं बताऊँ हमारी स्टडीज़ में 1 साल यही पर था साइकोलॉजी ऑफ सेक्स, विच इज़ लाइक एक क्वेश्चन में समअप करना थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसे समझिए. साइकोलॉजी सेज दैट रोटी कपड़ा मकान एंड सेक्स इज़ आर बायोलॉजिकल नीड. इट्स नॉट समथिंग कि जिसे हम स्किप कर सकते हैं. ओके, देयर इज़ अ ड्राइव मॉडल, ठीक है, मोटिव मॉडल जिसे हम कहते हैं. साइकोलॉजी की बुक्स में 11th-12th की बुक्स में भी है. उसमें लिखा हुआ है वी हैव अ बायोलॉजिकल ड्राइव एंड वी हैव थिंग्स कॉल्ड फिजियोलॉजिकल और अ साइकोलॉजिकल ड्राइव. जैसे पावर एक साइकोलॉजिकल ड्राइव है, बट सेक्स इज़ अ फिजियोलॉजिकल ड्राइव. ऑल दीज थिंग्स, जैसे अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएं तो वो बोलते हैं कि इंद्रियों से वशीभूत होकर ये चीज़ें हैं, काम है, वासना है. लेकिन यहाँ पे अगर हम समझेंगे कि ये बायोलॉजिकल है, इफ़ यू ग्रो अप, इफ़ यू ग्रो मैच्योर, सेक्स इज समथिंग दैट यू वांट टू हैव. यू कैन नॉट स्किप इट. ओके, ओनली दोज कैन स्किप इट हु सेज मैं तो भाई अब वैराग्य है, अब तो मुझे कुछ सोचना नहीं. दैट मीन्स इट इज समथिंग दैट यू आर बोर्न फॉर, बोर्न विद, बोर्न फ्रॉम एंड बोर्न फॉर. तो ये तीनों चीज़ें इंक्लाइंड हैं. आप ये नहीं बोल सकते कि जो सेक्स के बारे में बात कर रहा है वो गंदा है, या जो सेक्स करता है वो गंदा है, या जो सेक्स के बारे में पढ़ना चाह रहा है या पढ़ाना चाह रहा है वो बुरा है, क्योंकि इट इज़ समथिंग यू आर लाइक बोर्न विद. सो you are born with an organ, either it is a feminine, non-feminine, whatever. So you're born with an organ. So sex is something which is very important. Now let's relate it with the food thing or sleep, है ना. अब हमें लग रहा है हमारी नींद, हम सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारी नींद थोड़ी, and how you crave for it, है ना. And once you get your sleep, how relaxed, how rejuvenated you feel, है ना. You feel that power up back, okay. And similarly with the food, है ना, हम खाना नहीं खा रहे,
you crave for it, and once you have it, you feel somewhere satiated, or you feel happy, or you feel complete, है ना? And gives you an energy. Similarly, sex is that biological need that you keep on craving till you get it if you are a routine sex taker or lover or provider. But once you get it, you feel an elated sense of being. You feel worthy, you feel connected, your hormones feel somewhere connected, and you feel spiritually be you. You feel your souls get satisfied. Body to chodo, your souls get satisfied. Just ask this question to the couples who frequently do sex and their partner go out for a month or so. I bet they keeps on trying, connecting them on call, just talking some dirty talks with them. So it's that important. And if you are not getting a pleasurable and let's say, it's called a full sex where you are hormones also getting full, you will not able to concentrate on any other psychological, biological drive.